The Kashmir issue, 78 years have already gone past. That struggle continues to exist, and now it exists in many forms, one of which is the genocide, cultural and physical genocide of Kashmiri Pandits that took place. The nature of the relation is colonial. From Gilgit-Baltistan and from Pakistani-Occupied Jammu Kashmir, we don't have any representation in that Pakistan's so-called Constitutional Assembly. The general public has a different approach toward the whole process. Pakistan has got a pre-narrative. या आज़ादी आर भी लेंगे तो पार भी लेंगे, तो ना उनको सही आर का पता है ना सही पार का. The people of Gilgit-Baltistan hate the Dogras. United Nation, I don't trust United Nation. I don't believe in United Nation. मेरे पिताजी भी का गांव भी हमारा जो था वो मीरपुर के डैम में मंगला में डूब गया. How come you being a Pakistani support the Indian cause? Anyway, they call you the traitor. So I don't attend to these kind of nonsense के आप. वैसे आपका ख्वाब क्या है? The important thing is not that when it happens. The important thing is what do I do to make it happen. No लाग लपेट सीधा. आप बलूचिस्तान से हैं या PoJK से हैं? मैं हर उस देश से हूँ जो गुलाम है. कुछ नहीं, वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाए. वहाँ की गवर्नमेंट जो नहीं चाह रही है अभी तक. हमारी यूनिवर्सिटीज या हमारी गवर्नमेंट कहाँ या हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है. Indian military has the capability of liberating PoJK and Gilgit-Baltistan. But do they have the ability to challenge a world order set by Britain and America? Keeping the world informed. Welcome to Kashmir Discussion Forum from USA. Today we gather to examine a subject of deep geopolitical, humanitarian, and historical importance. The situation in Pakistan Occupied Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan. We're honored to host Dr. Amjad Ayub Mirza, a human rights activist originally from Mirpur, currently based in London, England, and an advocate for democratic rights and the peaceful resolution of issues affecting the people of these regions. Dr. Mirza has been an active voice raising awareness about governance, civil liberties, and the lived realities of those residing there. Our objective tonight is clarity to better understand ground realities, administrative structures, human rights concerns, and aspirations of people living in these areas. As always, the Kashmir Discussion Forum sees to promote informed dialogue that is factual, responsible, respectful, and forward-looking. Dr. Mirza, we sincerely thank you for your taking the time to join us and share your perspective with our community. Thanks, and floor is yours, Mirza Sahab. Thank you very much for having me on Kashmir Discussion Forum. I would like to briefly mention about the genesis of this crisis or conflict or issue, as they call it, the Kashmir issue. Everything was okay at the time of partition, and the indecisiveness of our king to make a decision whether to join India or Pakistan or stay independent. That led to the attack of 22nd of October 1947 on our erstwhile state of Jammu and Kashmir.
And then our king, in order to save our civilians and citizens and women and children from the brutality of the attacking, invading Pakistan army and the tribals, decided to seek help from India. And that then led to the 26th of October 1947 accession of the state of Jammu and Kashmir to India. The nature of the relation is colonial. Pakistani-Occupied Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan are not part of the political system of Pakistan. They do not have members of National Assembly like Lok Sabha in India, we call it. So from Gilgit-Baltistan and from Pakistani-Occupied Jammu Kashmir, we don't have any representation in that Pakistan's so-called Constitutional Assembly. We also do not have the right to campaign for the accession of PoJK and Gilgit-Baltistan with India, although all the governments that are formed or engineered and then formed in Pakistani-Occupied Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan are campaigning all the time for accession to Pakistan. However, the general public has a different approach towards the whole process. They do understand that Pakistan is the main culprit. But at the same time, why do they take out processions in Muzaffarabad and in Gilgit against India and call India an occupier? That is because Pakistan has got a pre-narrative. And that pre-narrative was, to some extent, the Jammu massacre, and to another main extent, it was that the people of Punch and some other places have rebelled against the Maharaja. And not only rebelled against the Maharaja, they are fighting to join Pakistan, the newly born so-called Islamic state. And the Hindu army of the Maharaja is massacring them. So the tribals were appealed to come and save their brethren in Jammu and Kashmir. So that was a pre-narrative. So under these circumstances, we have a proportionately blown up narrative that India is the occupier because we went as liberators and then India attacked and occupied large swaths of the state of Jammu and Kashmir. You cannot get a job unless you sign an oath of allegiance for Pakistan and the ideology of Pakistan. You cannot contest an election for any public office, whether local council or member of the Legislative Assembly in PoJK or the member of Legislative Assembly in POGB, Gilgit-Baltistan. You cannot, you have to sign an oath of allegiance. The only economic right that we have is go to foreign countries as laborers. So half of the population of Pakistani-Occupied Jammu Kashmir is abroad. There is no industry in PoJK or Gilgit-Baltistan. The main employer in Pakistani-Occupied Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan is the government sector, and not many vacancies turn up because the government sector is basically shrinking now. Human rights is anybody who tries to speak up, or they get a warning, or they are just, abducted, tortured, sent back in the society as an example, or in worst case scenarios, they are extrajudicially killed as well. There are two major reasons why Jammu and Kashmir cannot become a state again. One is ethnic and the other is religion. The people of Gilgit-Baltistan hate the Dogras. Why do they not like Dogras? Because General Zorawar is remembered there as an invader. और उनके खिलाफ 3 दफा उन्होंने रेबेल किया है. They hate Kashmiris. Why? Because they see that
in the state of Jammu and Kashmir, it was always Kashmir-centric. And they hated it. They never considered Kashmiris as their brethren. There was a state, yes, but it was a state with antagonizing ethnic groups put together. Then we have Ladakh. They celebrated when they were taken out of the state and made it into a union territory. They celebrated. Apex body or Kargil Democratic Alliance, one of the main demands is not we want to go back into the state of Jammu and Kashmir, restore the statehood. They are demanding a separate statehood status for Ladakh, 6th schedule. The people of Jammu, mostly Hindus, Sikhs, you never hear anything from Ladakhis calling for aar bhi lenge azadi to paar bhi lenge azadi. So this concept of azadi itself is contradictory, because for the people of Gilgit-Baltistan, azadi means azadi from Dogra, azadi from the Kashmir-centric politics, their own independent identity. Similarly, for the Ladakhis, आर पार आजादी मीन्स के उधर गिलगित बल्तिस्तान के साथ लद्दाख जुड़े और एक अलग हम यूनियन टेरिटरी हमने जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा नहीं बनना. दीज आर फैक्ट्स ऑन ग्राउंड. हाउ पीपल थिंक अबाउट द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाई दिस हैज फाउंड नो सोल्यूशन सो फार. तहरीक आजादी सिर्फ GHQ के हेडक्वार्टर में जिंदा है या फिर मदरसों में जो वो चला रहे हैं या उनके ट्रेनिंग कैंप्स में वहां तहरीक आजादी है. उसके अलावा कहीं मुझे आप दिखा दें, इंक्लूडिंग वादी, के जेन्युइन तहरीक आजादी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट कहीं पे है? कहीं पे भी नहीं है. ना लद्दाख में है, ना गिलगित बल्तिस्तान में. आज तक कोई जुलूस नहीं निकला कश्मीर के लिए. अब फिर रिलीजियसली आप देख लो. तो पहले तो ये है कि बिकॉज there are antagonizing forces that were brought together to form the state of Jammu and Kashmir. That is why you cannot have a Jammu Kashmir nationalist movement, because that nationalist movement needs the Gilgiti, Balti, the Ladakhi, the Jamwal to join into that nationalist struggle of for whatever their aim is. That is never going to happen. Never going to happen. The second is religious issues. The people of Jammu are afraid. They are scared that if PoJK joins Jammu Kashmir, then because Mirpur and all this part, PoJK majority is West Jammu, it's for Jammu, then the Hindus in Jammu are going to be decimated. They have this fear, which has got historical background, the massacre of Mirpur, and so much that took place in those areas. तो लद्दाख वाला बुद्धिस्ट है, वो भी मुसलमान से डर रहा है कि यहाँ पे इस्लामिफिकेशन होगी. गिलगित बल्तिस्तान वाले शिया हैं, वो सुन्नियों से डर रहे हैं कि ये तो यहाँ तालिबानाइजेशन हो जाएगी. Therefore, you cannot have a religious based nationalist movement either. इस्लाम के नाम पे भी आप नेशनलिज्म नहीं कर, रिलीजियस नेशनलिज्म भी नहीं हो सकता. तो इसलिए जब तक एक यूनानिमस मूवमेंट नहीं होती जिसपे सबका इत्तफाके राय हो, कंसेंसस हो, हाउ आर यू गोइंग टू बिल्ड अ डेमोक्रेट नेशनल रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट और रिलीजियस nationalistic jihadist movement? It's totally, I mean, this is impossible. Short-term way forward is that we build this narrative of truth in PoJK and Gilgit-Baltistan about history and about what I've said. Why? So that we abandon that
give up that narrative of independence and rejoin India. The only solution is for Jammu and Kashmir is to become an equal partner in the union of the Republic of India. India is not a country as such. It's a union of states and union territories that have been held together, despite differences here and there, held together by the Samvidhan of India. The Samvidhan of India has proven that over 78 years there has been no military takeover. Great. Pakistan has got half of its life is spent under direct military boots. तो रियासत जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है ये 101 साल तक रही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रियासत दोबारा कायम नहीं हो सकती. इसको कायम करने के लिए जो इसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कुछ, वो नहीं है. It's not there. Therefore, I urge my people in PoJK and Gilgit-Baltistan to raise the slogan of reunification of the state of Jammu and Kashmir by rejoining India. Thank you very much. I am open for questions. Thank you, Dr. Mirza Sahab. Thanks for your brief. I would like to ask you a question is in two parts. Yes, what message would you give policy makers in Delhi and Islamabad? I don't believe in these policy makers. I make my own policies. I think that is the time when we should make, as Pandit, Kashmiri Muslim, Kashmiri Democrats, of the whole state, we should sit together and make our own policy. I don't believe in United Nations. They were never there for the people of Kashmir. They were never there for Kashmiri Pandits. They were never there for Ladakhis. They were never there for us in PoJK. They were never there for the people of Gilgit-Baltistan. So we have to formulate a way forward. What would be your message to the global Kashmiri diaspora? Well, the first message is raise your children well. The worst thing that can happen to someone is enforced displacement. When you're forced by circumstances to leave your home, to leave your homeland and travel far, far away and try to, manage the trauma, because हम सारी जिंदगी trauma manage करते हैं अपना, हम resettle तो हो नहीं सकते, ठीक है ना? So I would say that help your grandchildren and your children to get good education, get settled wherever they are, because I have not seen a nation, a population that has been uprooted in such a large number ever return back to their homeland. Promote the concept or the idea of PoJK and Gilgit-Baltistan joining with India. Get into the Congress, get into the Senate, get into European parliaments, talk to these people or facilitate us to talk to them. उनके साथ बात करें, उनके आगे जाके केस प्लीड करें. तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बेबाक और बड़े स्ट्रेट सीधी बात करते हैं और वो शायद हमारे दिल को छू जाती है और पसंद आती है. मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो की वजह से और वो आगे बाहर लंदन आ गए, लेकिन क्या वजह है कि वो लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो आपको कहते हैं कि दैट यू आर ए ट्रेटर, यू आर स्पीकिंग फॉर इंडिया, कभी ऐसा होता है? प्रदीप दत्ता जी, बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देख के. थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं. जो मंगला डैम बना तो मीरपुर से लोग जो डिस्प्लेस हुए उसमें मैं भी शामिल हूँ. यानी मेरे पिताजी भी का गांव भी हमारा जो था वो मीरपुर के डैम में मंगला में डूब गया, ठीक है ना जी. तो मैं तो उसी डैम से का विक्टिम भी हूं और मैं तो प्रो इंडिया हूं और बेशुमार लोग प्रो इंडिया हैं मीरपुर में और PoJK में, लेकिन वो मेरी तरह बोल नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो उठा लिए जाएंगे. जो बाहर हैं डायस्पोरा में PoJK के लोग, उनमें भी एक अच्छी खासी तादाद इंडिया के साथ जाना चाहती है, लेकिन वो बोलते नहीं है क्योंकि उनके पीछे खानदान है. यहाँ वो बोलेंगे तो पीछे से खानदानों को उठा लेंगे. मैंने यहाँ पे प्रोटेस्ट प्रो इंडिया भी किए हैं,
पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने। ये 14 अगस्त मनाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन ने ग्लासगो में एक फंक्शन रखा था और सब मुझे पहचानते थे। मुझे तो ऐसा नहीं था कि ग्लासगो में ये पाकिस्तानी या कश्मीरी कम्युनिटी नहीं पहचानती, शक्ल से पहचानते थे। मैं अपनी फैमिली को लेके ना, बहन को, उसके बच्चों को, बीवी को, बच्चों को लेके, सबको लेके मैं पाकिस्तान में, वैसे ही एक फ्रेंड भी थे, उनको चला गया। बैनर मैंने हाथ से वो लिखे हुए थे, डाउन विद पाकिस्तान फ्री जम्मू कश्मीर और ये और वो आए, पहले मुझे देखे तो वो समझे मैं उसमें उसके लिए आया हूँ 14 अगस्त के लिए। तो वो आए मुझे, वो डॉक्टर साहब कैसे हो जी, ठीक हो, कितने जनाब, बड़ा साहब। जब वो मैं की कर रहे हो, वो भाग जाए, क्योंकि वो तो एम्बेसी जा रहे थे, सामने एम्बेसी थी। अब्दुल साहब, ऐसा होता है कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे से दैट हाउ कम यू बीइंग ए पाकिस्तानी सपोर्ट द इंडियन कॉज, एनीवे दे कॉल यू द ट्रेटर, एंड हाउ यू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दैट? हाँ, वो कहते हैं, रोज ही कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं, लेकिन आई डोंट रिस्पॉन्ड, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट दीज थिंग्स। ये जो आपको कोई, मसलन आप हैं, मैं आपको बोलूं कि जी आप खालिस्तान की सपोर्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पगड़ी पहनी है, आप सिख हैं, मैं आपको ऐसे वो करने की कोशिश करूं, डिफेम, और आप मुझे जवाब देने लग जाएं, तो मेरा तो काम हो गया, क्योंकि मेरा काम ही है कि मैंने आपको, आपकी अटेंशन डाइवर्ट करनी है, आपकी अटेंशन हासिल करनी है। सो आई डोंट अटेंड टू दीज काइंड ऑफ नॉनसेंस के आप इंडिया के एजेंट है। तो कहते हैं एक दो दफा, तो मैं कहता हाँ भाई, मैं इंडिया के एजेंट हूँ, मेरा देश है, मैं क्या अमेरिका का एजेंट हूँगा? हाँ, सीधी बात है। बिल्कुल। वैसे आपका ख्वाब क्या है कि एनी टाइम यू वांट टू सी दिस थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ टाइम, और क्या है आपका इस पर ट्री? ये तो एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है। आई डोंट नो। The important thing is not that when it happens, the important thing is what do I do to make it happen. That is more important. What you do as an individual to make it happen, that is more important. Are we doing something today, small baby step towards the reunification with India? अखंड भारत का जो एक हमारा सपना है, या उसको हम कर सकते हैं? आज हमने क्या किया उसके लिए, बस ये सोचें, ये ना सोचे कब होगा, हो जाएगा। दिए से दिया जलाए आप। You think that the time has come, people need to be on one platform where we can raise the voice for the Akhand Bharat? देखिए, टाइम हैज कम और टाइम हैज नॉट कम। वी शुड प्रोपगेट व्हाट वी बिलीव इन, एंड वी बिलीव दैट until and unless PoJK and PoGB are reunited with Ladakh and Jammu Kashmir and India as a whole, our struggle continues. It was just great what you said, because I have been all time thinking Jammu and Kashmir is actually an artificial combination of 5 different communities. Kashmiri Hindus go to Jammu, Dogras hate them. I know the story about the Mirpur murders because I was in Muzaffarabad at that time. And you go to Baltistan and Ladakh and other areas, then there's a Shia Sunni. I think the only solution is if they make a confederation consisting of 5 independent communities who have their political rights based on the number of population or whatever. इस वक्त झगड़ा ये है कि Kashmir Valley takes most of the assets of whatever we get. Jammu complains about getting nothing. And this is not going to be solved the way it is now. I think a confederation, whether with India or Pakistan or with both, would solve the solution, because we will not stop hating each other. That's in our blood. Okay, thank you. But I'm so glad to hear it. Thank you. You mentioned that unless the people in PoK want to join or Baltistan. Now there is a lot of dissension, a lot of dissatisfaction among the people in Pakistan Occupied Kashmir against the Pakistan government. Do you think that could be encouraged, inflamed, or created a positive atmosphere for that kind of demand, which you put as a part of the solution? Unless they want it, nothing will happen.
So right now, I think the atmosphere is very ripe or very mature to get in that direction. Your opinion, sir? Thank you very much. That's a very important question. Actually, if you look at Joint Awami Action Committee movement over the past 4 or 5 years, it dawns to me, I feel that this movement has been allowed to grow with the consent of Pakistan military establishment. You can't discuss the solution if you don't get to grips with the problem. G. Seems that you have been trying your best and nothing has been solved. So what do you think international human organization can help us? How can they help us? Can they do anything to help us to the situation? सब लोगों ने तो काफी कुछ किया है. वो एक proverb है, God helps those who helps themselves. So human rights organizations, UN, ये वो, they only help those who help themselves first. I want to thank Dr. Mirza for a very informative talk. Frankly, some of us Indians don't even know what the issues are. So I'm really very interested in listening and understanding it. But more I hear it, more hopeless I feel. and I wonder, where are we heading? So your question is, what do we ask the congressmen to do? Right. Okay. Ask them to invite me and arrange a talk with the Indian diaspora in their constituency. Talk to them about what happened. नमस्ते मिर्जा साहब, आपकी बेबाकी को सलाम करती हूँ। आप हमेशा दे धड़ाधड़, हमारे यहाँ जो योगी है ना, उस तरह से आप बात करते हैं। मैं आपको हमेशा देखा करती हूँ टीवी वगैरह पे, नो लाग लपेट सीधा। मैं आज तक ये समझती थी कि आप बलूचिस्तान से हैं। क्या आप बलूचिस्तान से हैं या पीओजेके से हैं? मैं हर उस देश से हूँ जो गुलाम है, वैसे पीओजेके से हूँ। हाँ, पीओजेके से हैं। तो मैंने जो सुना है कि मतलब वहां के जो लोग हैं, कहाँ भी, तो हम अगर पूरा कश्मीर चाहते हैं तो ये इतना बड़ा मतलब डर लगता है कि फिर इसके बाद तो मतलब वहां पर हिंदुओं का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और मेरे दिमाग में एक ये भी सवाल आता है कि बहुत से लोगों ने ये मांग की है कि भाई जम्मू को अलग करो वैली से। जम्मू को या तो मतलब सेंट्रल टेरिटरी बना दो या फिर उसको स्टेट का दर्जा दे दो। अदरवाइज हिंदुओं का और शरणार्थियों का वहां पर उद्धार नहीं होने वाला, और सारा मलाई फिर वैली को जाता है, फिर रेडिकल्स को जाता है। अभी जितना भी गवर्नमेंट जो गुडीज दे रही है फ्री, उसका सारा मजा वो लोग ले रहे हैं। हिंदूज यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हिंदूज कॉलेज खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, सारे एडमिशन उन लोगों के हैं, सारी स्कॉलरशिप उन लोगों को मिलती है। तो ये दर्द मेरे को हमेशा रहता है कि भैया जब भी हम कभी जो भी मेहनत करते हैं, मलाई सब तुम ही खाते हो और तुम हम ही को मारते हो। आपने सही बात की है और बिल्कुल यही मसला है। ये इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया का 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनना, कि उसके लिए अगर हमें पीओजेके की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दें, नहीं चाहिए। हाँ, दे दें कुर्बानी, कोई बात नहीं। पीओजेके में रेडिकलिज्म बहुत है, लेकिन ऐसे भी हैं, सेकुलर भी बहुत हैं, वो ये बात नहीं है। तो अभी लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि नैरेटिव जो है ना, असल पहले भी तो मुसलमान और हिंदू रहते ही थे जम्मू कश्मीर में, तो लेकिन अब जो एंटेगनिज्म है ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ एंटेगनिज्म है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 10 साल अगर जम्मू कश्मीर ये पीओजेके आजाद हो जाता है इंडिया के फेवर में, 10 साल का टाइम मैंने कहा कि चाहिए। फिर आई वोंट लाइक पीओजेके reunification at the cost of security of India, Jammu, and especially the Hindus, because I never forgot for a second that Kashmiri Hindus are the real Kashmiris. They are the indigenous. The rest is already converted. Yeah. और मुझे तो लोग कहते हैं ये ऊपर से
लगवा के भेजा ईश्वर Well, ने। that मुझे was my कहते हैं ये पंडित question. है, कसम से मुझे कहते हैं ये कश्मीरी पंडित है ये। मैं कहता नहीं अच्छा भाई ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये कई बार आपको जब देखती थी ना, पहले पहले तो मैं बोलती थी ये आदमी का नाम मुस्लिम नाम है और ये तो शिव जी का तिलक लगाया हुआ है हाँ शिव, ऊपर वाले ने। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार एवरीबॉडी एंड मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। पहले हम सिर्फ पढ़ते थे आपके बारे में, आपके लेख पढ़ते थे, आपके ट्वीट पढ़ते थे, आज रूबरू हो गए तो इसलिए और भी अच्छा लगा। तो मगर जो भी बात आपने कही 100% सही है। 7 डेकेड्स हमने वेस्ट किए ऑलरेडी। अब आप जैसे जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको या तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इतनी अकल आ जाए वो यूनिवर्सिटीज में बुला लें ताकि यंगर जनरेशन को पता चले। नहीं तो सारे अभी मुझे लगता है ये पर्दों पे पर्दों, किसी को पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हमें लगता है पीओके भी हमारा है, वो भी हमारा है, हमारा कौन सा है वो कुछ नहीं। वहां के लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाए वो, क्या वो दिल्ली के साथ आना चाहते हैं? लंदन में भी थी, वहां पे मैंने भी देखा कि चाहते कुछ तो चाहते, हाँ जी नहीं आना चाहिए आना चाहिए, पर वो जज्बा नहीं है जो आपने अभी बात की है। कश्मीरी पंडित जब निकल गई, क्या लद्दाख में कोई भी एक भी बार कोई मुजाहिरा हुआ कि नहीं ये इन विचारों पे त्रासदी हुई? लद्दाख तो हमारा ही पार्ट था ना। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए तो कश्मीर जैसे बाकी स्टेट्स हैं वो वैसे कश्मीर ही है। मेरे ही बच्चों के लिए कश्मीर वैसे ही है। तो मुझे आप डॉक्टर मिर्जा ये बताएं, हमारी यूनिवर्सिटीज या हमारी गवर्नमेंट कहाँ या हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? अदरवाइज मुझे लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा धर जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब जितनी भी सिंसेरिटी के साथ या ईमानदारी के साथ दे सकूं, मैं अपने तौर पर कोशिश करूंगा कि वो जवाब उसका दूं। थैंक यू। ये अंग्रेज का वो बनाया हुआ एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो उसने अमेरिका के हाथ में दिया है। ओके, इंडियन आर्मी कैन very easily reach Mirpur in hours time. No problem. Muzaffarabad, 2 hours maybe max. Indian military has the capability. Do they have the ability to challenge a world order set by Britain and America? Because this world order was not set by India. India is part of that world order, which was set by Britain, America, and other world powers. ये असल मुश्किल एक ये भी है, इसलिए मैं हिंदुस्तान की फौज को कभी नहीं मैंने कहा कि जी आओ जी बचाओ जी मर गए कब गए, बिकॉज आई नो कि वो दैट डायरेक्शन कैन नॉट बी टेकन। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को आला तालीम दो। हम लोग जो बेघर हो गए बेवतन हो गए, जिस जिस जगह भी हो अपनी आने वाली नस्लों को अच्छी एजुकेशन दे जाओ बस। क्योंकि हमारे जो पुरख थे पंडित, हमारे पुरखों की जो रवायत है वो शिक्षा है, वो एजुकेशन रही है। इसीलिए जो है वो 101 साल तक उसमें कश्मीरी पंडित ही ने वो सारा कुछ चलाया। और मलाई जैसे आप कह रही थी पामिला जी, मलाई कोई और खा गया, मलाई कश्मीरी खा गए। काम सारा पंडितों ने किया, मलाई कश्मीरी खा गए। That's true. That's Thank true. you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, Dr. Mirza, for sharing your perspective and lived experience. Conversations like these are essential. They allow us to examine complex issues through the lens of human rights, governance, and democratic accountability. At Kashmir Discussion Forum, our goal is dialogue, informed, respectful, and solution-oriented. To our viewers, stay engaged, stay informed, and continue to ask thoughtful questions. Democracy goes stronger through discussions only. Thank you very much. I think there were many things that you said. I have heard this thing from my grandmother, from my mother, and we have suffered through a lot. And now I think we are done. I don't think we should give up. As you said, we have to still spread the word of,
education and wisdom. We can help many more people by telling them our history, our past, and learn from that. Thank you very much again. Thanks again, and love to see you again. Keep smiling.